उम्मती के लिए उम्र भर अल्लाह अल्लाह अश्क अपना बहाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्र भर। आइए हजरत गिरामी अब उस जुबान की दरखसानी व ताबानी और जौलानी का नज़ारा किया जाए जो इस वक्त इंटरनेशनल जुबान बन चुकी है और मौजूदा वक्त में उसकी ज़रूरत भी है। लिहाजा नाउ आई एम वेरी पॉलिटली रिक्वेस्टिंग फैजुर रहमान टू कम ऑन स्टेज एंड डिलीवर हिज स्पीच इन इंग्लिश। मोहम्मद फैजुर रहमान मंच पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I would like to say thanks to my respected teacher for giving me an opportunity to hone my pronunciation skills. Today I am going to deliver a speech on importance of knowledge. The importance of knowledge. The Quran and the Hadith are full of statements about the importance and value of knowledge. The way itself starts by saying how Allah Ta'ala gives a man knowledge which he did not have. Allama al-insana ma lam ya'lam. The value of knowledge that was given to ignorant and backwards Arabs can be seen by the revolutionary effect that it had. It catapulted them from the bottom to top, making them leaders and makers of world history for 1,000 years. So the burning question for us Muslims today is, does this knowledge have the same power today? Today, as prophesied, Islam has become a stranger. We do not see the ways of Islam in the league of the Muslims. Can Islam again create a revolution, transforming our inner life, our societies, transform the world like it did 1444 years ago? If so, what it is in the teachings of Islam that is revolutionary, how can we make these teachings live again so that they become part of our lives? Instead of being part of history books, answer to all of these questions and contained within the intellectual tradition of Islam. But unfortunately, this tradition itself has been forgotten by the Muslims, who are too busy studying the Western knowledge to have time for their intellectual tradition. I end up my talk with a special thanks to all wonderful people for listening to me with a great patience. Thank you so much and have a nice day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.